Okay, assalamu alaikum everyone. So we are going to start with May-June 2020 paper today, paper 2, variant 2. So let's begin with this. Acha. So Stephen had an annual income of $21,500 in 2018. His annual income increased to 22,790 in 2019. Calculate the percentage increase, right? So that's a pretty standard question. So आपके पास एक amount है, वो increase हो कितनी हो गई है, आपको percentage increase find करना है. So how do you do that? You say new amount minus the old amount divided by the old amount multiplied by 100%, and that's going to give you the percentage increase. So that's 22,790 minus 21,500 divided by 21,500 multiplied by 100%. ठीक है, ये आपकी 2019 वाली अमाउंट थी, 18 वाली अमाउंट थी, आपने चेंज फाइंड कर लिया. ठीक है, so आप देखेंगे यहाँ पे क्या आता है, 22,790 minus 21,500. Sorry, 6%. 6%. Okay, so you get 6% here. So that's 6%. Okay, now Stephen invests $1,260 in a bank. The bank pays simple interest at a rate of 2.5% per year. Okay, now remember, it's simple interest. We used to say I equals the interest equals PRT. अगर आप जो है वो rate को percentage में लिख रहे हो, decimals में लिख रहे हो, this is fine. अगर आपने 2.5 डालना है तो फिर आप R को 100 से divide कर दोगे. So that's your interest. Calculate the amount Stephen has in the bank at the end of 3 years. Okay. So अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं. Let's find the interest. So what is the interest going to be? Interest is equal to PRT over 100. So principal is the initial amount, the original amount. That's the principal. That's 1260. So 1260 multiplied by the rate, that is 2.5, multiplied by the time, that is 3 years. We got 3 here, divided by 100. ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या होएगा, interest आ जाएगा, interest की amount आ जाएगी. So let's calculate this. 1260 into 2.5 into 3 divided by 100. So what do we get? We get 94.5 from here. ठीक है, तो 3 सालों के अंदर ये आपका interest था. Okay. Now, so what is the total amount? उसने आपसे interest नहीं पूछा था, उसने आपसे पूछा कि total amount कितनी होगी in the bank after 3 years. So what is the total amount in the bank? That's 1260 plus 94.5, and that gives you $1,354.5. $1,354.5, and that's your final result here. Okay. Any issues with this? No, sir. Okay, good. Let's move on. So then it says Stephen changes 4,300 rupees, Indian rupees, into dollars, and the exchange rate for that is given, and that is $1 is equal to 67.8 Indian rupees. Work out how much he receives, give your answer correct to the nearest dollar. So आपने क्या करना है? You have the dollar amount and you have the Indian rupee amount. Okay, so we know that $1 corresponds to 67.8 Indian rupees. So uske paas kitne hai? 4,300 Indian rupees. How many dollars is that going to be? Let's call that X. Cross multiply. Aapke paas aa jayega 4,300 multiplied. 4,300 is equal to 67.8 into X, and you get the amount. You get the value of X from here. So that's 63.42. Okay, good. So that turns out to be $63.42. अच्छा, ये amount आपके पास आई है 63.42. लेकिन उसने क्या कहा है? Give your answer correct to the nearest dollar. So this is important. क्या nearest dollar तक आपने देना है? So this becomes $63. उसको round off करना है आपने to the nearest dollar. So this is going to be important, and that gives you $63. Okay. So I think it was a pretty straightforward question, the first one. Let's move on to the next. So we have the length of a rectangle that is 6 centimeters more than its width, or width usne batayi hui hai, that is W centimeters. The perimeter of the rectangle is 37 centimeters. Form an equation in W and solve it to find the width of the rectangle.
अच्छा, तो आपके पास एक रेक्टेंगल है, ओके, वो आपको क्या कह रहा है, the width is W and the length is 6 centimeters more than that, right? तो क्या मतलब है, लेंथ कितनी हो जाएगी, W plus 6. 6W. Now the 6 perimeter, yes, x plus W plus 6, so perimeter is equal to 37. Perimeter 37 है, आप यहाँ से एक इक्वेशन बना लोगे, you will say 2 into this W plus 2 into W plus 6, that should equal 37. और आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास W की वैल्यू आ जाएगी, so you get 2W plus 2W plus 12 equals 37. That gives you 4W equals 25, and W will turn out to be 6.25 from here. So that is your width here, that is 6.25 centimeters. Okay. Yes, sir. 6.25 ही आ रहा है. Okay, good. Acha. Let's look at the next one. So we have this rectangle that's 20 centimeter by 8 centimeter. It's cut from a rectangle that is 28 centimeters by 15 centimeters. So एक बड़ा rectangle है, उसके अंदर से आपने एक छोटा rectangle cut out कर लिया. Okay, now calculate the upper bound for the area of the shaded region. Okay, now this is slightly tricky. देखिए उसने क्या कहा है, सारी measurements जो हैं they are given correct to the nearest centimeter. Each measurement is given correct to the nearest centimeter. ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं आपको चाहिए upper bound of the area. What that means is what is the maximum possible value of the shaded region, maximum possible area that maximum possible value of the shaded region, what is that going to be? अच्छा, अभी एक थोड़ा सा ट्रिकी है, सो इसमें अक्सर कुछ लोगों का मसला होता है. अब देखिए टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना उसने, उसका मतलब क्या है, 0.5 का error होगा. 0.5 का एरर होएगा, राइट. तो नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर, उसको आपने 0.5 से उसको आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 0.5 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है दोनों साइड्स पे, प्लस माइनस 0.5. व्हाट दैट मींस इज every one of these amounts जो आपने ऊपर लिखी हुई है 20 सेंटीमीटर, इसकी असल अमाउंट कहां से कहां तक है, 19.5 से लेकर 20.5 के दरमियान में कुछ वैल्यू है. 8 सेंटीमीटर, इसकी असल अमाउंट कहां से कहां तक हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग between 7.5 and 8.5. Similarly, the other ones, 28 can be anything between 27.5 and 28.5, and 15 can be anything between 14.5 and 15.5. ओके, ये इसके दरमियान में कहीं पे भी हो सकता है. ये आपके पास पॉसिबल वैल्यूज हैं ऑफ ईच ऑफ दीज मेजरमेंट्स. अच्छा देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है. व्हाट इज द शेडेड रीजन नाउ, शेडेड एरिया कितना होएगा, इट्स द एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल माइनस द एरिया of the small rectangle. ठीक है, अब यहां पे देखें, आपको शेडेड रीजन मैक्सिमम चाहिए, शेडेड एरिया आपको मैक्सिमम चाहिए. What would you need for? Just give me 1 minute. Okay, so what you have to do is you have to find the shaded region, the maximum possible value of the shaded region. Okay, अच्छा, अब इसमें shaded region किन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, it's depending on the area of the big rectangle and the area of the small rectangle. तो basically area of big rectangle जो है, ये मैक्सिमम जितनी बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, सो ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका शेडेड एरिया होएगा. सो बड़े वाले रेक्टेंगल का आपने मैक्सिमम पॉसिबल एरिया देखना है, दैट्स 20.5
अब ये वाली लेंथ यूज करोगे, नहीं सॉरी बड़ा वाला जो है दैट्स हियर 28 सेंटीमीटर पे 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या हो सकता है? इफ यू चूज 28.5 फ्रॉम हियर and you choose 15.5 from here, that will give you the maximum possible area of the big rectangle. So that's 28.5 multiplied by 15.5. ठीक है? अच्छा, यहाँ तक तो it was fairly intuitive. अच्छा, we have to subtract from it the area of the small bound. rectangle का, छोटे रेक्टेंगल का एरिया आपने माइनस करना है उसमें से। अब क्योंकि ये चीज माइनस हो रही है, देखिए आपको शेड रीजन बड़ा चाहिए। ओवरऑल ये जो टोटल अमाउंट है, यू वांट दिस टू बी एज बिग एज पॉसिबल। ये जो माइनस वाला नंबर है, ये आपको छोटा चाहिए। जितना कम आप माइनस करोगे उतनी आपकी टोटल अमाउंट बड़ी होगी, राइट? बिकॉज यू सी इफ यू हैव लेट्स से 8 - 4, ये क्या आता है? ये आपको देता है 4 रिजल्ट। 8 माइनस आप कोई छोटी अमाउंट करो, 3 करो लेट्स से, दैट गिव्स यू अ बिगर नंबर। सो माइनस के बाद वाला नंबर आपका छोटा होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। सो जो स्मॉलर रेक्टेंगल है यहाँ पे, उसमें हम क्या करेंगे, उसका हम लीस्ट पॉसिबल एरिया देखेंगे। सो वेयर इज दैट गोइंग टू कम फ्रॉम? 20 सेंटीमीटर जो ये वाली लेंथ है, इसमें से हम 19.5 वाला नंबर लेंगे बिकॉज दैट्स द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर दैट। और इसी तरह से 8 सेंटीमीटर वाले पे हम 7.5 वैल्यू लेंगे। सो दैट गिव्स अस 19.5 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। यहां से जो आपके पास एरिया आएगा, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। 28.5 into 15.5 minus 19.5 into 7.5, and that gives you 295.5. That is 295.5 centimeters square. This is the upper bound of the shaded area. This is the upper bound. ठीक है? अब upper bound के लिए जरूरी नहीं है कि आप सारी values की upper bounds लोगे। That's not necessary. आपने सब में ये नहीं करना कि 20.5 यहाँ से ले लिया, 8.5 इधर से लिया, 28.5, 15.5. No, it's not necessary. You'll have to look at the context. क्या चीज plus हो रही है, क्या चीज minus हो रही है, right? So generally, you can use this. आप देखिए, या तो इस तरह का केस होएगा, प्लस हो रहा होगा, कुछ माइनस हो रहा होगा, प्लस माइनस हो रहा होगा। अगर आपको अपर बाउंड चाहिए, लेट्स से आपको ओवरऑल अपर बाउंड चाहिए, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू डिराइव अ रूल हियर। अगर आपको ओवरऑल अपर बाउंड चाहिए, ठीक है, और आप ओवरऑल अपर बाउंड चाहिए, तो आप क्या करोगे? जो पॉजिटिव वाला होएगा, जो प्लस हो रहा होएगा, उसकी आप अपर बाउंड लोगे, और जो माइनस हो रहा होगा उसकी आप लोअर बाउंड लोगे, उसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू लोगे। अगर आपको अपर बाउंड चाहिए थी, अगर आपको लोअर बाउंड चाहिए थी, लेट्स से अगर आपको लोअर बाउंड चाहिए थी, ओवरऑल लोअर बाउंड, उसमें आप क्या करोगे? जो प्लस वाला होगा उसकी आप लीस्ट पॉसिबल वैल्यू लोगे, राइट? और जो माइनस वाला होगा उसकी आप ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू यानी उसकी अपर बाउंड लोगे। डज दैट मेक सेंस? Yes. राइट? जो अपर बाउंड अगर आपने निकालनी हो टोटल, तो उसमें क्या करना है? जो चीज ऐड हो रही है उसकी अपर बाउंड, जो माइनस हो रही है उसकी लोअर बाउंड। अगर आपने ओवरऑल लोअर बाउंड निकालनी हो, जो प्लस हो रही है चीज उसकी लोअर बाउंड, और जो माइनस हो रही है उसकी अपर बाउंड। एंड द सेम इज द केस फॉर व्हेन यू हैव अ फ्रैक्शन एज वेल। फ्रैक्शन है आपके पास, उसमें एक चीज ऊपर है, एक चीज नीचे है, उसमें भी अब यही प्लस माइनस की जगह आपके पास अगर होता है कि कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है या न्यूमरेटर के अंदर है, समथिंग इज इन द न्यूमरेटर, तो वो उसकी अपर बाउंड लोगे। इफ समथिंग इज द इन द डिनोमिनेटर, उसकी आप लोअर बाउंड लोगे। You can actually do it like this. अगर कुछ आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में होता, उसकी आप जो है वो अपर बाउंड लेते। अगर पास यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में है, उसकी आप लोअर बाउंड लेते। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास कोई न्यूमरेटर में होता है, उसकी लोअर बाउंड लेते, डिनोमिनेटर में होता है उसकी आप अपर बाउंड लेते। Okay, so this we have discussed a couple of questions like that before, जहाँ पे हमारे पास ऊपर फ्रैक्शन होती थी। फ्रैक्शन में भी आपको यही रूल अप्लाई करना है, बस प्लस की जगह आपने देखना है कि न्यूमरेटर क्या आ रहा है। प्लस की जगह न्यूमरेटर, प्लस की जगह आप न्यूमरेटर डाल दोगे और माइनस की जगह
आपको denominator consider कर लोगे. So let's move on. So let's in question number 3 we have this light L that is fixed on a building 8 meters that is above the base B of the building. Now there's a light L here and it's 8 meters above the base of the building. Now a point P is on the horizontal ground that's 12 meters from B. So a point P hai yahan pe, that is 12 meters from that point B. Now we have to calculate the angle of elevation of L from B. अच्छा, from P, P के ऊपर angle बन रहा है, L को देख रहे हो आप वहां पे खड़े होके. So P पे आपका line of sight क्या होएगा? That's horizontal. कितना ऊपर देखना पड़ रहा है आपको? This is the angle that you're looking for. इतना आपको ऊपर देखना पड़ रहा है. ठीक है? तो ये angle आपको figure out करना है. Now you have the information required. You know that the perpendicular is 8, the base is 12. Calculate that angle using a simple trigonometric ratio. You will say tan of theta is perpendicular over the base. That's 8 over 12. So theta आपके पास आ जाएगा tan inverse of 8 over 12, and that will give you some amount. यार देखने क्या आता है? What's this? 33.6. 33.7 degrees in fact. So 33.7 degrees. सर हम ये वाला पार्ट दोबारा समझा सकते हैं? पिछला पार्ट ये वाला, ये tan वाला. अच्छा यही वाला. ओके सो लेट मी रिपीट. ये देखिए उसने आपके पास ये ट्रायंगल है. You have this triangle given. Okay. This is the triangle that you have. It's a right angle triangle. You have two lengths in this. This is 8 meters and this length is 12 meters. Okay, ये दो lengths given है आपको. आपको कहता है calculate the angle of elevation of L from B. What does that mean? आप P पे खड़े होके L को देख रहे हो ऊपर. ठीक है. Angle of elevation क्या होता है कि जो भी आपका line of sight है, अगर आप P पे खड़े हुए हो, this is your line of sight. आप horizontal देखते हो ना, आप सीधे खड़े हुए हो, you're looking horizontally, बिल्कुल अपने eye level के ऊपर. This is your eye level. अपने eye level से आपको कितना ऊपर देखना पड़ेगा L की तरफ देखने के लिए? This is the angle that we're looking for. So this is the angle that we're looking for. That's the theta. ठीक है? ये theta में चाहिए. How do you find that? It's a right angle triangle. इसमें जो angle के opposite है, that's perpendicular. जो angle के साथ है, that is the base. We are basically saying since tan theta is equal to perpendicular over the base, we're just applying this formula here. Tan theta equals 8 over 12, जहां से हमारे पास theta की value आ जाएगी. Does that make sense, Shahir? Yes, sir. Okay. So this is 33.7 degrees here. So आप यहाँ से इसको calculator से evaluate करोगे. This will turn out to be 33.7 degrees. Acha. Now let's look at the next part. What does it say? It says a ladder is placed on the ground at Q to reach the light L. अच्छा. अब ऊपर जो था उसी बिल्डिंग में हमारे पास जो ये हाइट 8 थी उस लाइट की, अब अपने एक लैडर प्लेस किया है इस पॉइंट Q के ऊपर to reach that light. Now the ladder makes an angle of 70 degrees with the ground. Calculate the length QL. QL आपसे पूछ रहा है अब QL क्या है? QL is the hypotenuse. According to this angle, this is the perpendicular. Perpendicular और hypotenuse में क्या ratio होती है? Sine, right? So sine theta is equal to perpendicular over the hypotenuse. So that gives you sine theta equal to sine 70 equal to 8 over the hypotenuse, that is QL. यहाँ से आपके पास QL आ जाएगा. QL is equal to 8 over sine of 70 degrees. ठीक है, ये evaluate कर लें. 8 divided by 8.51. So this is 8.51 meters. This length here. Sir, can I just ask the students also practice these papers? Sorry, yes, Shahid, of course, because most of the syllabus is the same.
आपके पास सिर्फ differentiation एक थोड़ा सा extra है, but otherwise, most of the syllabus is the same. So in terms of practice, at least, this is good practice for that. But of course, along with this, you should be practicing IGCSE papers as well. So concepts तो वही हैं, concepts कोई बहुत ज़्यादा different नहीं है. Paper जो है उसकी exact details थोड़ी सी different हो सकती हैं. वो उसके लिए आप जो है वो पेपर जो प्रैक्टिस कर लें, लेकिन इससे आपको कॉन्सेप्ट्स का एटलीस्ट फायदा होएगा. Okay, so you should be doing those IGCSE papers alongside as well, so that's important. But this will help you in clarifying some concepts at least. Yes, sir. Okay, so a vertical pole RS of length 1.6 meters is placed touching the horizontal ground. The light produces a shadow TS of the pole on the ground. Acha. So up kya hai? This is a vertical pole. So we have this vertical pole here, that's RS, that is placed touching the horizontal ground. And this has a height of 1.6 meters. Acha. Now this light is producing a shadow of the pole. अब इसका shadow बन रहा है नीचे, जो ये TS से represent हुआ है. So this TS here is the shadow. ठीक है. Now LRT is a straight line, so हम नजर आ रहे हैं वहाँ पे. TB is 6.5 meters. So this is the information that's given. We have to calculate TS. TS figure out करना है. Okay, TS हमें figure out करना है. So think about this. If you look at the figure, ये vertical line है और ये भी एक vertical line है. So these figures are actually similar to each other, right? So अगर हम देखें the triangle TSR and the triangle TBL, they are similar, right? Because with एक triangle है उसके अंदर एक parallel line बना दिया आपने RS with LB. We know that this ends up this gives us similar figures. इसमें corresponding sides की ratios जो हैं वो equal होंगी. So we can get 8/1.6. अगर हम ये vertical lengths को की ratio निकालें, that should be the same as the ratio of this base of the bigger triangle, that is 6.5, divided by the base of the smaller triangle, that is TS. Does this make sense? And the ratios को equate किया. So we are basically doing LB over RS equal to TB over TS. ठीक है. यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? TS आ जाएगा. ये देख लें क्या आता है. TS is 6.5 multiplied by 1.6 divided by 8, and you get a value from there. 6.5 to 1.6. मैं तब से वो different methods कर रहा हूँ. Similar triangles. Yeah, so you could do it some other way as well. लेकिन उसमें of course it's going to take more time. Time ज़्यादा लग सकता है. और मैं सब आप कर सकते हैं. आप ये एंगल फिगर आउट कर लेते हैं. एंगल फिगर आउट कर लो, उसके बाद फिर आप जो है ये TS फाइंड कर लो, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके. That's also possible. So there could be other methods as well, of course. So you get 1.3 from here. So this is 1.3 meters. Okay. All right. So let's look at the next one. So we're done with question number 3. Let's move on to question number 4. Okay. Now the table summarizes the time M hours that each student in a year group spent listening to music in one day. Some of the results are shown on the histogram. अच्छा, ये हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन गिवन है. Sir, from where can I practice differentiation?
differentiation के लिए you will not be able to do that from the Cambridge syllabus, because यहाँ पे तो इसके जो O levels का जो maths का syllabus है उसमें तो differentiation नहीं है, so you will have to look at the IGCSE past papers. आप उसी के past papers आपको देखने पड़ेंगे, अगर उसका topical book है उसकी वो use कर सकते हैं. That's what I would recommend. बिल्कुल basic differentiation है वैसे वो जो IGCSE के syllabus में है. So if you can just do, some questions on that, 5, let's say 8 to 10 questions, that should be good enough practice for that. क्योंकि बहुत ज़्यादा complication नहीं है, बिल्कुल basic है उसके अंदर. So आप IGCSE के papers, IGCSE के past papers कोई आप ले लें, उसमें आप के पास अगर कोई topical past papers available हैं जो आपके teachers ने आपसे share किए हुए हैं, तो आप वो use कर सकते हैं. Otherwise आप yearly past papers के अंदर से differentiation के questions देख सकते हैं. Okay, now we have this table that summarizes the time that each student in a year group spent listening to music in one particular day. Some of the results are shown on the histogram. तो नीचे histogram के अंदर आपको ये results show किए हुए हैं इसने. ठीक है. अच्छा, अब क्या क्या information है? We have these class intervals और हर interval के अंदर we have the frequency given. ठीक है, हर एक के अंदर हमारे पास frequency given है. There. Okay, so in every interval we have the frequency given. So 0 से 1 interval है, 1 से 1.5 है, then 1.5 to 2 and so on. अब यहाँ पे histogram में नीचे, remember histogram के अंदर हमारे पास हमेशा frequency density होती है on the y-axis. So we've got frequency density on the y-axis here, we've got time on the x-axis. Now we have to use the histogram to find the value of p. Okay, p क्या है? If you look at the table, we have this thing here that is p. Now remember frequency density क्या होती थी? Frequency density was equal to, you can write that here. Frequency over density. class. Yes, so frequency divided by the class width. तो class width हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबकी, और in fact वो p की देख लेते हैं सिर्फ. So 1.5 से लेकर 2 तक, what is the class width? That's 0.5, right? Because this is from 1.5 to 2. तो class width कितनी होती है? Upper limit minus the lower limit, 2 minus 1.5, that is 0.5. Okay. अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं frequency density. इसका एक column आ गया. फिर we need to use fill out the other values in the next part, but let's just do it. So for p for now, अच्छा, तो ये class width हमारे पास 0.5 आ गई. Frequency density हमारे पास ये histogram पे देखें, ये कौन सी class है? 1.5 से 2 तक. That's this class here, ये वाली class. इसमें आप देखें frequency density कितनी है इसकी? 30. ये बार कहाँ तक जा रही है? 30 इसकी value है. So the density is basically 30 here from that histogram. So आप ये formula use कर सकते हो. You can say, since the frequency density is 30 and the class width is 0.5, the frequency therefore is going to be 30 into 0.5, which is 15. So ये जो p की value यहाँ पे आती है, that should actually be 15 here. Does that make sense? Yes, sir. Okay. Let's look at the next part. It says complete the histogram. ठीक है, आपको पहले सिर्फ first 3 intervals का दिया हुआ है, बाकी आपको complete करना है. So what do you do for that? You find all the frequency densities. सारों की frequency densities find करनी पड़ेंगी. उसके लिए आपको सारे वो class width भी find करनी पड़ेगी पहले. So let's write down the class widths first. So 0 से 1, the class width is 1. 1 to 1.5, that's 0.5. 2 to 2.5, that is again 0.5. 2.5 to 3.5, that is 1. 3.5 to 5, that is 1.5. So all I'm doing is I'm subtracting from the upper limit this lower limit, and I get the class width. 7 minus 5, that gives us 2. ये हमारी होगी सारी class widths.
Now we find frequency densities for all of them using this formula. Frequency को divide कर देना है class width के साथ, ठीक है? 10 over 0.5, that is 20. अच्छा sorry, पहले भी था 8 over 1, that's 8. 14 over 0.5, that will be 28. 23 over 1, that's just 23. 18 over 1.5, what's that? That is 12. 12 over 2, that will be 6. ये हमारे पास सारी frequency densities आ गई. Okay, now we just need to plot them on this graph. So we already have the first three. तो 30 के बाद हमारे पास ये 28 है. So 2 से 2.5 तक, 2 to 2.5, it's going to be 8. So that's going to be here. यहाँ पे बनेगा, ठीक है? we mark कर लेते हैं, फिर हम इसको ruler से कर लेंगे. So we have this bar here. अच्छा नहीं, sorry, that's 28. मैंने 8 पे कर दिया. It's actually 28. 28 is going to be somewhere here. This is 28. ठीक है, ये एक बार आ गई. तो उसके बाद क्या है? उसके बाद we have 23 from 2.5 to 3.5. 2.5 से लेकर 3.5 तक 23 हाइट होनी चाहिए. 2.5 से 3.5 तक कितनी हाइट होनी चाहिए? 23. So that's going to be right here. यहाँ पे ये बार बन जाएगी, ठीक है? Okay. What next? Next we have 12 from 3.5 to 5. 3.5 से 5 तक 12 होगा. Okay, 3.5 से लेकर 5 यहाँ तक 12 हाइट होगी. So that's going to be right here. ठीक है, ये हो गया हमारा next bar. And then from 5 to 7 we have 6 as the height. 5 से 7 तक हमारी 6 height होगी. So 5 से 7 तक the height is going to be 6 here. Okay, now we just complete the histogram. So बस वो bars आपने vertical यहाँ पे बना देनी है. Remember, histogram के अंदर हमेशा आपके पास जो bars होते हैं, they are connected to each other. There's no gap between the bars. Gap नहीं हो सकता bars के दरम्यान में कोई भी. ठीक है? Okay, so we have this here. Then the next one, that's going to be like this. Okay, and we have next here, like this. And then finally, we have the final bar there. That looks like this. So that's our histogram. Okay, this is how your histogram would look like. Is this clear to everyone? Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay, good. So that's the histogram. Now, the table below summarizes the time, C hours, that each student in a group of 50 students spent cooking 1 week. Okay, so now this is not related to the earlier parts. So yeah, a different table here. It's the time that each student spent cooking. Okay, now there are 50 students in total. That means the frequencies and sum kya hai? 50. That's our sigma f. Right, so this is our sigma f. Acha. So this is the information that's given. We have to calculate an estimate of the mean time spent cooking. Now, how do we calculate the mean? Mean is sigma fx divided by sigma f. But when we have data like this, हमें सबसे पहले क्या करना होता है? Midpoints find करने होते हैं, right? So let's call that x. Midpoints इनके find करते हैं. 0 से 2 के दरम्यान में, that's 1. 2 और 4 का midpoint is 3. 4, 6 का is 5. 6 और 8 का midpoint is 7. 8 और 10 का midpoint is 9. We've got x here. अब हमें क्या करना है? fx का एक column बना लेना है यहाँ पे. So that's frequency multiplied by that value of x. So 8 into 1, that's 8. 16 into 3, that's 48. 15 into 5, that is 75. Then 7 into 7 is 49. 4 into 9 is 36. And that will give you
some total number here. So you can check what this turns out to be. What's this total? 8 plus 48 plus 216. 216. Okay, so this is 216 and this is our sigma fx, fx ka sum. Just input those values here. 216 Yes, divided sir. by Mean value 50. is 4.32. 4.32. Very good. So that's your mean, 4.32 hours. All right. So that's the mean value. Good. Let's look Sir, at at what time will the class will end? so here we are on question number 4 right now. 5 or 6 हमारे पास क्या है? They are, yeah, so in about 30 minutes at 6:20, about around 6:20 inshallah. Okay. Acha. So draw the cumulative frequency diagram. So we have to draw the cumulative frequency diagram for this table. अच्छा, cumulative frequency diagram के लिए हमें क्या चाहिए होता है? We need cumulative frequencies. हमें एक table बनाना पड़ेगा सबसे पहले जिसके अंदर cumulative frequencies हो. Okay, so what I'm going to do for that is I'm just going to copy this table there. मैं यहाँ पे copy कर लूँ. Use that. All right. अच्छा, so what do we need? We need cumulative frequencies. अच्छा, पहले cumulative frequencies रख लेते हैं. So from CF भी कह सकते हैं. So cumulative frequencies में क्या होता है? We don't have a lower bound, so we only need C less than or equal to 2. This is what we need. पहले वाले का आंसर कर देते हैं. सिर्फ upper limits होती हैं. So 2 से नीचे कितने हैं? 8. Okay. 4 से कम कितने हैं? Sum of these two, that's 24. 6 से कम कितने हैं? 24 plus this 15, that is 39. 8 से कम कितने हैं? 39 plus 7, that is 46. And 10 से कम कितने हैं? 50. And पे आपका 50 आ गया. That confirms that your calculations are correct because the total number was 50. Now you just need to plot these numbers. 2 and 8. 2 के ऊपर 8 point आ गया आपका. So 2 and 8, that's this point here. And then 4 and 24. 4 के ऊपर 24 value है. So that's right here. Then you have 6 and 39. That's here. 8 and 46. 8 के ऊपर 46 and then 10 के ऊपर 50 और 0 के ऊपर 0. Okay, so you've got these points. आपको सिर्फ क्या करना है? इनको join कर देना using that curve. Again, you have to make sure that you're doing it with a pencil. So you can erase and correct if you need to. So this is what the curve looks like. Yeah, cumulative frequency curve की shape तकरीबन इसी तरह की होती है हमेशा. So that's our cumulative frequency curve. We have to use this diagram to find an estimate for the median. That's a median find करना है. What is the total? Yeah. Sir, cumulative frequency graph को अगर वो zero से मतलब touch ना हो रहा हो तभी हमने वो origin से करना touch. नहीं, origin से जरूरी नहीं होता origin से touch कर रहा हो, लेकिन हमेशा जो है वो x axis पे कहीं पे touch करता है. x axis पे कहीं पे जरूर touch करता है. अगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, राइट, उसमें फिर ओरिजिन पे नहीं जाता वो. लेकिन आपके पास मोस्टली यही केस होगा, ज्यादातर ये होता है इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस कि वो ओरिजिन पे टच करते हैं. अभी ऐसा हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो. दैट्स अ पॉसिबिलिटी, राइट. लेकिन एक्स एक्सिस पे हमेशा टच करेगा कहीं ना कहीं पे. अच्छा, use the cumulative frequency diagram to find an estimate for the median. So total हमारे पास 50 है, so we just divide that by 2. That gives us 25. तो 25 के corresponding हम x axis पे जाके value देखेंगे कौन सी आती है. So that's this point here somewhere. If I look at my x axis, that's around 4.1 से पहले थोड़ा सा 4 नहीं
4 है, ये 5 है. Okay, so that's 4.4 or 4.2 के दरम्यान में है for me. ये दोनों boxes के दरम्यान में, so that I will say this is 4.1 for me. The median for me turns out to be 4.1 almost. Okay, that is the median. All right, so that's it on question number 4. Any problems with this? No. Okay, let's move on. We have to solve these simultaneous equations by showing our working, so that's really straightforward. You can use any method that you want. So I often prefer elimination where it is possible. So what you can do is क्या करना पड़ेगा, दोनों को multiply करना पड़ेगा in fact. So what I can do is I can multiply the first one, let's say with 3 and multiply the second equation by 2. आप substitution prefer करते हैं, that's also fine. Whatever works for you. अगर fractions आ जाए तो I generally try to avoid substitution, उसमें mistake के chances थोड़े से बढ़ जाते हैं, but that's okay. अब मैंने पहली equation को 3 से multiply किया है, that's 6x minus 12y equals 33. Second equation को 2 से multiply कर रहा हूँ, I get 6x plus 6y equal to minus 12. Okay, now what I do is I subtract the second equation from the first one. My sign change करता हूँ. I've got a negative sign here, plus sign here. This gets cancelled out, and I'm left with minus 18y equal to 45. यहाँ से y की value आ जाएगी 45 over 18. What's that? That's minus 2.5. Yeah. So minus 2.5 y आ गया. अब आप किसी भी equation में input कर दें उसको, उससे आपके पास corresponding x की value भी आ जाएगी. We have 2 into x minus 4 into minus 2.5 equals 11. इस वाले equation में इसमें input कर रहा हूँ. I get the corresponding value of x from here as well. So 2x plus 10 is equal to 11. 2x is equal to 1 and x is equal to 0.5. So x is 0.5 and y is minus 2.5. Okay. Now make sure that you show your working, उसने आपको यहाँ पे specify भी किया हुआ है, because the thing is these equations can be solved from the calculator directly, and examiner of course knows that. So अगर आप directly answer लिख दोगे तो examiner को लगेगा कि आपने calculator से directly किया है, and you will not get marks for that. Sir, we can also multiply the first equation by 3 and the second equation by 4 in order to become 12y and 12y. Yes, exactly. You can also do that. You can also do that. Yes, so that will also work. So you can say 6x minus 12y equals 33, and the second will become 12x plus 12y. That gives you minus 24. You can eliminate y from there. You get 18x equal to 11, or in fact 9. X will turn out to be 0.5 from there. We'll find the corresponding value for y from there as well. So that also works. That's correct. Yes. Yeah. Yes. Okay, good. All right, let's move on. So we have to solve this equation. This is the quadratic equation. We have to show all our working and give our answer correct to those decimal places. Remember, जब भी उसने कहा होता है decimal places is significant figures. That means you'll have to use the quadratic formula. Factorization नहीं होगी. So let's do that. We have 2x squared equal to 24 minus 3x. Let's take everything to the left side. We have 2x squared plus 3x minus 24 equals 0. And now let's apply the quadratic formula. आप फिर भी check कर सकते हो if you want, अगर आपको लगता है कि factorization हो सकती है, जो नहीं हो सकती वैसे. But we get x equal to minus b, right? Formula minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2 times a. Just going to input values there. We know that a is equal to 2, b is equal to 3, and c is equal to minus 24. So what do we get from this? We get minus 3 plus minus square root of 3 square minus 4 into 2 into minus 24 divided by 2 into 2. Yeah, आप देख लेंगे, you'll get 2 values from there. You can check what they are.
Okay, so what do we get from this? Anyone? So क्या results आते हैं? We have -3 plus सर 201 मिलता है अगर स्क्वायर ब्रैकेट को अगर करें. okay, so bracket में 201 आता है divided by 4, so we get -3 plus square root of this, which is 14.177 divided by 4, or -3 minus 14.177 divided by 4. ये दोनों evaluate कर लें और देखें आपके पास क्या आता है. So in the first case, I'm getting 2.79, and for the second one, I'm getting -4.29. So these are the two solutions of this equation. Okay, so that's the quadratic equation. Now h is inversely proportional to the cube of g. Now what does that mean? H is inversely proportional to cube of g. So that's what it says. इसमें आप proportionality का sign खत्म करके क्या करोगे? K लगा दोगे. That means H is equal to K over G cube. Right? H is inversely proportional. दूसरे पे fraction होगी. H is equal to K over G cube. You can't just write it like this. You have to find the value of this K. Right? K की value क्या है? You have to figure that out. So how do you do that? You input the value of H and G inside this. H की जगह 4.5 input कर दो. G की जगह 2 input कर दो. You'll get the value of K from there. ठीक है? K की आएगा 4.5 into 2 cube. So that's 36. Okay, so that's 36. So H is therefore equal to 36 divided by G cube. That is H. All right. Is this clear? Yes. Okay. Then it says find the value of G when H is equal to 32 over 3. तो आपको इस formula को use करके G की value figure out करनी है. So we just put H equal to 32 over 3. So 32 over 3 is equal to 36 over G cube. ठीक है. अब क्या करो? Cross multiply कर लो. You get G cube there. 32 को नीचे ले आते हैं यहाँ पे. We have 36 multiplied by 3 divided by 32. That will give us something. G cube is equal to 36 times 3 divided by 32, which is 3.375. We take the cube root of this. Yeah, so we have to take the cube root of this now. Cube root of both sides. What do we get? 1.5. We get 1.5. So G is equal to 1.5 therefore. Okay. Achha. Now let's move on to the next one. So we have this question number 6 now. This will be the last one that we do today. Then we will continue on this paper tomorrow. So, yeah, it was really easy. Yes, we were quite quick today as well because the paper was relatively straightforward. So let's look at this. We have 2 of these cards that are chosen at random. So there are 5 cards in total. We are choosing 2 of them at random. They are placed next to each other to give a 2-digit number. Find the probability that the 2-digit number is less than 30. Okay, now think about this. We have to form a 2-digit number from these numbers. So, 2 numbers आपको वहां से निकालने हैं उन 5 digits में से और उनको place करना है इसके अंदर. अच्छा. Now, what is the possibility? So it says the 2-digit number should be less than 30. 30 से छोटा नंबर होना चाहिए. तो ये पहले वाले के अंदर, पहले बॉक्स के अंदर इनमें से कौन सा नंबर आ सकता है? फर्स्ट बॉक्स के अंदर इनमें से कौन सा नंबर आ सकता है? Can you have 5 here? Will that number be less than 30 अगर हम यहाँ पे 5 आ जाए? We cannot have 5 here, right? तो 50 something हो जाएगा, 30 से छोटा तो नहीं होगा. अच्छा, can we have 2 here?
Yes. Yes, we can have 2 because 20 something is of course going to be less than 30. Can we have 4 here? 4 नहीं आ सकता यहाँ पे. Can we have 6 here? 6 भी नहीं आ सकता. Can we have 3 here? अगर 3 आता है तो बाकी सारे numbers जो हैं वो 0 से बड़े हैं. बाकी कोई भी number यहाँ पर आएगा, let's say 32 आ जाए, 35 आ जाए, 34 आ जाए, 36 आ जाए. All of these numbers are greater than 30. वो भी आपकी condition को satisfy नहीं करेंगे. What that means is the first box here can only have 2. पहले box के अंदर सिर्फ 2 आ सकता है. What is the probability of selecting 2? What is the probability of selecting 2 out of these 5 numbers? Probability of 2 कितनी हुई? 1/5. Right? 2 select करने की आप randomly आपने एक card choose किया है इसमें से. क्या probability है कि वो 2 होगा? It's 1/5. अच्छा, अब हमने 2 choose कर लिया पहले वाले में. How many numbers are you left with? You're left with the other 4 numbers. 2 तो खत्म हो गया. अब बाकियों में से कौन सा आ सकता है यहाँ पे? कोई भी आ सकता है. 5 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 3 आ जाए. Any one of them will satisfy our condition. उनमें से कोई भी हो सकता है, so that you can say 4 out of 4. Any of the other numbers, it doesn't matter. So this into this, that gives you 1/5, and that's your probability. 1/5. No, Manahil, the probability of getting 2 there is not 4/5, it's 1/5. Again, 5 numbers हैं हमारे पास, उनमें से सिर्फ एक 2 है. If you were to select something randomly, that's just 2 की probability आने की 2 आने की probability क्या है? That's just 1/5. Right? So first box में 2 आने की probability is 1/5. उसके बाद second box में तो जो मर्जी आ जाए बाकी चारों में से. So that's like 4 numbers रह गए हैं. चारों के चार आपकी condition को satisfy करते हैं. So that you have 4/4 there. You get 1/5 from that. Is this okay? Yes, sir. Acha, 25, 24, 23, 26. Yes, so there are 4 possible numbers. That is correct. Lekin, that's numbers आपके पास 4 possible हैं. So that means मतलब 2 पहले आ जाए, बाद में आपके पास कुछ भी आ सकते. You can have 3 there, you can have 4 there, you can have 5 there, you can have 6 there. It doesn't matter. Any of them, you can have any of them. So yes, there are 4 total numbers that are possible. Okay. फिर आपको बाकी सारे numbers लिखने पड़ेंगे. आपके पास कितने numbers possible हैं जो 30 से नीचे हैं? You have 23, 24, 25, 26. Okay. So ये 4 numbers आपके पास छोटे हैं. फिर बाकी total numbers कितने आपके पास possible हैं? आपको सारे लिखने पड़ेंगे. जैसे 32, 34, 35, 36. Then फिर 4 के साथ लिखे हैं 42, 43, 45, 46. Then 52, 53, 54, 56. And then 62, 63, 64, 65. कितने numbers बन गए total? 20 possible numbers हैं. If we go with what you are suggesting, Manahil, हमारे पास 20 total possible numbers हैं, right? उन 20 में से कितने आप condition को satisfy करते हैं? These 4. So what is the probability then? That's 4/20. That's also 1/5, right? So you can also think of it this way, but of course that's going to take more time. But that's fine. That gives you the same result as well. That's 1/5. Is that okay? All right. दोनों को mix नहीं करना. You either choose this one or that one. Okay. अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं list all the possible 2-digit numbers that are prime. अच्छा, 2-digit numbers prime, एक तो हमें पता है even तो नहीं हो सकते. Even number तो prime सिर्फ 2 होता है, right? सिर्फ 2 आपका even number है जो prime है. 2-digit number कोई भी ऐसा नहीं है जो even number हो. इसका एक तो मतलब ये पता चल गया हमें. अगर ये हम बना लें यहाँ पे, ये हमारे पास 2 possible digits आ सकते हैं. अच्छा, 2 तो नहीं आ सकता यहाँ पे second digit.
क्योंकि इवन नहीं हो सकता, 4 भी नहीं आ सकता सेकंड डिजिट, 6 भी नहीं आ सकता, 2 4 6 में से कोई भी आपका सेकंड डिजिट नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि आपका नंबर इवन हो जाएगा, अगर इवन नंबर हो जाएगा तो वो प्राइम नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा 5 हो सकता है? 5 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 5 अगर आपके पास आ जाए कभी भी नंबर के एंड पे, वो हमेशा 5 का मल्टीपल होता है, 5 भी नहीं आ सकता। ओनली लेफ्ट विद 3। सेकंड डिजिट आपको पता चल गया 3 हो सकता है, 3 के अलावा कोई और नहीं हो सकता, ठीक है? सेकंड डिजिट हैज टू बी 3, उस 3 के अलावा कोई डिजिट नहीं हो सकता। अब आप देख लें पहला डिजिट क्या होना चाहिए कि वो प्राइम नंबर हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 23, is that a prime number? Yes, it is a prime number. Then you have 43, is that a prime number? That's also a prime number. 53, yes, that's also a prime number. Then you have 63, is that a prime number? That's not a prime number because 63 is divisible by 3. So you have these prime numbers. So you'll say there are 3 possibilities, 23, 43 and 53. तो आपकी जो है ऑप्शंस आप थोड़ी सी लिमिट कर लें, आप पहले से कुछ सोच लें कि अच्छा इवन तो नहीं हो सकता, तो 2 4 6 तीनों आपने निकाल दिए अपनी सेकंड नंबर की पॉसिबिलिटी में से। यूनिट डिजिट आपका 2 4 6 नहीं हो सकता, इस तरह 5 भी नहीं हो सकता, अगर 5 होगा तो इट्स नेसेसरली गोइंग टू बी मल्टीपल ऑफ 5, वो भी प्राइम नहीं हो सकता। तो ये हमने एक लिमिट कर लिया अपनी ऑप्शंस को, अच्छा 3 होना चाहिए सेकंड डिजिट 3 है, तो फर्स्ट डिजिट आपके पास ये पॉसिबिलिटीज है, उनमें आप देख लें कौन से प्राइम है। These are the only possibilities. If you wanted, you could write all of those possible numbers. आप सारे possible numbers ना ऊपर लिखे थे 20 possible numbers हैं, आप सारे लिखते फिर उनमें से choose करते. That's also fine, but of course that's going to take more time. Result आपको ये आना था end पे. Is this okay? Yes. All right. Now let's look at this. Find the probability that the 2-digit number is a multiple of 4. Multiple of 4. Again, think about it first. अच्छा multiple of 4 की क्या probability हो सकती है? Okay. अच्छा अब इसमें आप इसको छोटा कर सकते हैं किसी तरह से. Let me think about it. So 4 probability. अच्छा एक कर सकते हैं आप, सिर्फ ऑड नंबर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, इवन नंबर्स फिर आपको चेक करने होंगे सारे. सो we'll have to check the even numbers. So let's think about it. Okay, तो एक तो आपको पता होना चाहिए टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है? टोटल नंबर्स कितने पॉसिबल हैं यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन करने पड़ेंगे. तो लेट्स डू दैट. सो टोटल नंबर्स 23 24 25 26. देखिए 2 के साथ ये 4 नंबर्स पॉसिबल है, इस तरह हर नंबर के साथ हमारे पास ये 4 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, राइट? सो वी हैव 32 33 sorry 34 35 36 and so on. टोटल 20 पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे, ये आपको पता चल गया. 20 पॉसिबिलिटीज टोटल होंगी, बिकॉज 3 के साथ भी ये 4 नंबर आएंगे, फिर 4 के साथ भी ये 4 नंबर आएंगे, 5 के साथ भी 4 नंबर आ रहे होंगे, 6 के साथ भी 4 नंबर आ रहे होंगे. टोटल 20 नंबर्स हो गए. So that's something that we understand. Total 20 numbers possible. ठीक है? अच्छा वो कहते हैं how the probability of the 2-digit number being a multiple of 4. 4 का multiple. अब इसमें एटलीस्ट ये कर सकते हैं हम, हमें पता है कि जब भी ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर तो कोई 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता है ना. ऑड नंबर्स 4 के मल्टीपल सारे इवन होंगे, तो हम सिर्फ इवन नंबर्स को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? और इफ यू वांटेड यू कैन जस्ट राइट ऑल ऑफ देम, इतना ना सोचें. यू कैन जस्ट से 42 43 45 46. Then you have 52 53 54 56. Then you have 62 63 64 and 65. ये सारे numbers possible हैं, total 20. अब कौन-कौन से आपके 4 के multiples हैं? Odd numbers तो नहीं हो सकते, even numbers में देखते जाएं. 24 है, 26 नहीं है, 32 है, 36 है. Then you have 40, no 40s में कोई भी नहीं आ रहा क्योंकि 40 और 44 होता है. 52, then you have 56. 56,
then you have 62. 62 तो नहीं होता, 64. 62 नहीं होता, 64. Okay, so these are all the multiples of 4, Oh, sir, 62. and these are 6 in total. So we say the probability of the 2-digit number being a multiple of 4 is 6 over 20. 6 over 20, or you can say that's 3 over 10. Okay? Is this fine? Yes. Yes, sir. All right. Acha, let's look at this. Now, Rowan throws a dice 200 times. The bar chart shows his results. So उसने 200 times dice throw किया है, and the bar chart shows the results. अच्छा, और देखें bar chart में आपके पास y-axis पर frequency होती है, x-axis पे ये individual numbers हैं. यहाँ पे intervals भी नहीं होते bar chart में कभी. Bar chart में अलग-अलग numbers होते हैं, right? अच्छा, use the bar chart to complete the table of results. Okay. So 1 पे 46 है, 2 पे 31 है, 3 पे 28 है, 4 पे क्या वैल्यू आ रही है? That's 35. 4 पे 35. 5 पे we have 22. 6 के ऊपर we have this number here, that's 38. Okay, so we completed the table. इसका sum जो है वो 200 होना चाहिए. उसने ऊपर बताया हुआ है, आप उसको verify भी कर सकते हो. This is your sum. अच्छा. Now, using Rowan's results, find the relative frequency that he threw a number less than 5. Relative frequency is it's a concept very similar to probability. Probability की practical form जो होती है, that's relative frequency. आपने बताना है कि numbers less than 3 की क्या frequency है as compared to the total. और आप ये भी कह सकते हो probability of numbers less than 3. It's the same thing basically. So 3 से कम numbers कौन से हैं आपके पास? You've got these two numbers, 1 और 2. ये total frequency इनकी कितनी आती है? 46 plus 31. 46 plus 31. What's that? This is 77. Okay, ये total 77 है. Out of the total, out of 200, the relative frequency of a number less than 3 वो क्या हो जाएगी? 77 divided by 200. Right? So that's the relative frequency for this. Is this okay? Yes, sir. All right. Now, Rowan says that the dice he has thrown is not a fair dice. Achha. Make 2 comments to explain why the dice may not be fair. Okay. So why would this not be fair? So let's look at this. अच्छा, so we can say ये हमारे पास देखिए. अच्छा, पहले तो ये समझे fair dice क्या होता है. Fair dice is when all the probabilities are equal. Fair dice का मतलब है probability of every number is equal. Probability of all numbers of every number is equal. That's what a fair dice means. Why would this not be a fair dice? Why would this not be a fair dice? Minahil, this is yes, this is the next part of that question. It's unrelated to the previous question. To the previous part, ये बिल्कुल उससे different है, but it's the same question actually. उसी question का second part है. अच्छा. So why do you think? Explain. Make 2 comments to explain why this may not be fair. अच्छा, fair dice में probabilities equal होनी चाहिए. यहाँ पे हम देख लेते हैं probabilities आपको क्या नजर आ रहा है. कुछ dice ऐसे, कुछ numbers ऐसे हैं जिनकी probabilities look to be higher than being equal. So देखिए 6 numbers है ना total. हर number की probability क्या होनी चाहिए थी? Ideally, it should have been 1 over 6. Ideally सारे numbers की probability जो है वो 1 over 6 होनी चाहिए थी. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? हम for example अगर 1 को देखें, हम 1 को देखें. 1 की probability क्या है? 46 over 50. So probability of 1
is equal to 46 over 200. Sorry, 46 over 200. 46 divided by the total. 46 divided by the total, that's 200. इसको आप देखें ये क्या आता है हमारे पास अगर इसको हम decimals में रखें 46 over 200, this turns out to be 0.23. 0.23 होना क्या चाहिए था? अगर फेयर डाइस होता तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? 1/6. 1/6 क्या होता है वाला डेसिमल्स के अंदर? For comparison, that's 0.167. Now, since 0.23 is much bigger than 1/6, that means it's not a fair dice, right? Because it's a lot bigger than that. Similarly, आप और example भी देख सकते हो. अभी देखिए कुछ बहुत छोटा नंबर आ रहा है. 5 की probability देख लें. 5 की probability क्या है? 22 over 200. What's that? So probability of 5, what's that? That's 22 over 200, and that's around 0.1 something. 22 over 200, that's 0.11. And this is much smaller than 1/6. So 1/6 is बहुत छोटी है, right? So this is much bigger. This probability is much bigger, and this is much smaller. तो probabilities equal नहीं लग रही. आप उनको words में लिख सकते हो कि 1 की probability बहुत ज्यादा है और 5 की probability बहुत कम है. ठीक है, एक तो ये हो गया. अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना होता है कि ये इस तरह की जो conclusions हैं ये आप तब दे सकते हो अगर आपका सैंपल एक उसका रीजनेबल साइज है, उसका साइज बड़ा होना चाहिए, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने 200 टाइम्स उसको थ्रो किया. अगर आप इसको सिर्फ 10 टाइम्स थ्रो करते, राइट, सिर्फ 10 टाइम्स थ्रो करते, अगर उसमें प्रोबेबिलिटीज अगर आपकी डिफरेंट आ रही होती, दैट वुड नॉट बी वेरी रिलायबल. बिकॉज सिर्फ 10 दफा थ्रो किया उसमें तो मतलब काफी चांस है कि हो सकता है कि एक नंबर बहुत ज्यादा दफा आ जाए, इवन इफ इट्स अ फेयर डाइस. आपके पास एक असल में डाइस हो व्हिच इज फेयर, उसको आप सिर्फ 10 दफा थ्रो करो, बहुत प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 3 दफा जो है लेट्स से 3 आ जाए, 3 दफा 4 आ जाए, राइट? अगर बहुत कम दफा करते हो एक एक्सपेरिमेंट, उसमें एरर के चांसेस हो सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा दफा रिपीट करते हो, इफ यू डू एन एक्सपेरिमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, अगर आपका सैंपल बहुत बड़ा हो, उसमें आपके रिजल्ट्स रिलायबल होते हैं. तो इस केस के अंदर एक तो ठीक है, आपका डेटा आपको बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ one is so I can write that in words. The probability of 1 is much bigger than 1/6. Probability of 1 is much bigger than 1/6, and the probability of 5 is much smaller than 1/6. ये आपकी एक argument होएगा. And when is this argument valid? This argument is valid when the sample that you're dealing with is a large sample. You should have enough data. So we have enough data. We have large enough data for the results to be reliable. Okay, it's 2 marks. So 1 mark would be on telling कि आपके पास sample is large enough, क्योंकि it's a big number 200. So generally आप कह सकते हो roughly जो है ना, अगर आपका ये number जो है आप 30 के आसपास 30 से बड़ा हो, तो you would say it's a large sample, it's a big enough sample. वैसे तो context पे depend करता है, but for our purposes at this level, you can use 30 as the benchmark. 30 से बड़ा हो तो आपने कहना है it's a large sample. 30 से छोटा आपने कहना है it's not a large sample, so results may not be reliable. ठीक है, so क्योंकि ये large sample है, large data है, that is the reason we can trust these results. और वो results क्या कह रहे हैं कि 1 की probability is much bigger than the probability of
then 1/6, and 5 की probability is much smaller. Okay, so that's it for today. If you have any questions on this, let me know. We will complete this paper tomorrow, inshallah. Any problems on this? No, sir. No? No, sir, ये काफी easy paper था. Okay, so are you done with the rest of the questions as well? 7, 8, 9, 11, 9, 10, 11? For today? No, वैसे are you done with it yourself? खुद से आपने attempt किया हुआ है? No, sir. No, sir. मैंने अभी ये किए हैं. अच्छा, so generally होता ही है कि अगर शुरू में बहुत आसान questions आते हैं तो end में मुश्किल रहता है. Yeah, so you do get some difficult questions at the end. So let's see. We end it here. I'll see you all again tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.